welcome to this class. Today we are going to discuss about differential calculus. Now what is differential calculus? Differential calculus is one of the branch of mathematics which deals with the derivative, differential equation, application of derivative, application of differential equation. Now this branch is very important as far as the application of mathematics is concerned, because nowadays, or because we know that in each and every field mathematics is widely used, and this application of mathematics is maximum done through the derivative, because whenever to solve the problems on rate of change, proportionality problems, rate of change problems, where to use derivative and where to solve the differential equations. So that's why this branch is important, and to study this branch, the basic concept behind this is limit and continuity, because without limit and continuity it is not possible to have the differentiations. So in this lecture I am going to explain you what is limit and what is continuity, how it is useful for solving the example. This is the module 1, limit and continuity. So first we see what is limit. So limit means, suppose that the function is given, suppose y equal to fx. Now y equal to fx is the given function. Now it is a function of one variable, that is x. So whenever the function is given, we have to check whether this function is defined or not. If the function is defined at all point, then there is no problem. But suppose that the function is not defined at a particular point in the given interval. Suppose this is the function defined in the closed interval AB. Now suppose the given function is not defined at some particular point of this closed interval AB. Then the question is, what about that point? Because since the point is in closed interval AB, so naturally we must know the nature of that point in this closed interval AB. So to find the nature of the function at that particular point, there needs some concept which can tell about the nature of the function at that particular point where the direct function value is not defined. So this concept is nothing but the limit. Now in case of limit, we are going just approaches towards that point. We are not exactly consider x equal to 1, but we just approach towards 1. So when we approach towards 1, we know the nature of the function nearer to 1. We can find the nature of the function or the value of function nearer to 1. 1च्या अगदी आजूबाजूच्या पॉइंट्सचा, सगळ्या पॉइंट्स करता, 1च्या नेबरहूडच्या पॉइंट्स करता, we can find the nature or the value of the function. So for example, suppose this is your interval, suppose this is AB interval. Now here this is the point where we have to find the limit. This is the point where we have to find the limit. Now at this point the function is not defined. Suppose at x0 the given function is not defined. So we have to find the nature of the function at this point. So we approach towards x0 from left side, as well as we approach towards x0 from right side. So यहाँ से जा सकते हैं x0 को, यहाँ से भी आ सकते हैं. Accordingly, we have the value of the function. Suppose this is the graph of the function y equal to f of x. So as x approaches to x0, we can find the value of the function. Similarly, as x approaches to x0 from right side, again we can find the value of the function. So this approaches gives the limit. So for this we write it is limit x tends to x0. Okay. This is the symbol for the limit. Limit x tends to x0 and limit of what? F of x. So this is the limit of the function. Limit means we have to find the limiting value of the function at a particular point where the function is not defined. Now since just now I have told you that whenever we approaches towards x0,
we have two possibility, either you approaches from left side or you approaches from right side. So here x tends to x0 from left side, so here all variables have value less than x0, and that's why this limit we denote it by minus. X approaches to x0, negate minus, and we call this as f of x0 minus. This is called left hand limit. This is called left hand limit. So as x approaches to x0 from left hand side, we have the value of the function, and this is nothing approximation. This is nothing but a limit of a function. Since we approaches from left, it is called the left hand limit. Similarly, when we approaches from right side से अप्रोच करेंगे x0 को, तो वो x की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर होगी x0 से, क्योंकि x0 से if we go right we have more value, if we go left we have less value. So from this side we have the value greater than x0. So in this case this limit is nothing but limit x tends to x0 plus. Just this is the symbol. प्लस का मतलब होता है कि x0 से ग्रेटर है यहाँ पे वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी राइट प्लस f of x, and this is called right limit. This is called right hand limit or right limit, and the symbol is f of x0 plus. So these are the two values, f(x0) minus f of x0 plus. So this is left limit, this is right limit. Now if both these limits are equal, if these two limits are equal, f of x0 minus equal to f of x0 plus, if these two limits equal, we say that the function has a limit, or limit exists for the function, and the common value is limit x tends to x0 f of x. We write this, and suppose its value is suppose n. We call the limit equal to n, because we have some real value. We have limit की जो भी value आएंगे वो कुछ real number आएगा, so we denote that real number by n. So this we say that limit exists for this, and the existed limit is the real value, and we denote it by n. So this is the symbol. So whenever the function is given, if that function is not defined at a particular point in the interval, we have the limit concept, and we find the limit of the function at that particular point, and that value is a real value. We denote it by n. So here n is the limit of this function. Now the question is how we solve the examples on this limit. Now it's a very simple. We can have the examples on limit. Suppose this function is given. Now the function is given limit. We have to calculate limit x tends to 1, x square, x minus 2 upon x square minus 4. So this the function is given. Now the function is x minus 2 upon x square minus 4. This function is given. We have to find this limit. अब लिमिट कौन से पॉइंट पे निकालना है? 1 के ऊपर. We have to find the limit at x equal to 1. So to find the limit at x equal to 1, कैसे करना है इसको? एक तो डायरेक्टली अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं. You directly put the value, or you can simplify and then put the value. But before that you must check कि डायरेक्ट अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो फंक्शन डिफाइन होता कि नहीं. अगर डायरेक्ट वैल्यू से यहाँ फंक्शन इनफाइनाइट होता है तो वी कैन नॉट फाइंड डायरेक्ट वैल्यू. यू हैव टू सिंप्लीफाई. तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 अगर हियर वी टेक लिमिट x टेंड्स टू 2. सो सपोज अगर x इक्वल टू 2 यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 होगा. यहाँ पे भी 4 माइनस 4 0. सो वी हैव 0 by 0. नाउ 0 by 0 इज नथिंग बट व्हाट? 0 by 0 is not defined quantity. It is indeterminate quantity. So we cannot directly put here value. So we have to simplify. We need to simplify this. So x tends to 2. Now x minus 2. Here we factorize this. So x minus 2 into x plus 2. So you can cancel this 2. And this is limit x tends to 2. 1 upon x plus 2. And when we put x equal to 2, it is 2 plus 2, that is 4. So we have the value 4, 1 by 4. So 1 by 4 is the value when we, rather some simplification is there. So after simplification we can have the value. अगर directly देखेंगे तो function is not defined at the particular point, or it is indeterminate form. तो direct अगर value put करते हैं तो it is indeterminate form, लेकिन उसको थोड़ा simplify करते हैं तो we have the finite value. So this type of examples we can have to find the
लिमिट ऑफ ए गिवन फंक्शन। तो ये लिमिट ऑफ ए फंक्शन के एग्जाम्पल ऐसे अपन कर सकते हैं। बट सपोज मेनी टाइम्स the limit is given and you have to verify whether this is the limit of the given function. For example, limit x tends to 1, 2x plus 5 equal to 7. Now it is understood that क्योंकि अगर देखो यहाँ पे x equal to 1 हम पुट करेंगे तो 2 plus 5 that is 7. It is understood that this is the value of the limit. यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, यहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन वगैरह नहीं आ रहा, डायरेक्ट फाइनाइट वैल्यू आ रही है। अगर डायरेक्ट अपन x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं तो वी हैव द फाइनाइट वैल्यू एंड द वैल्यू इज 7। तो ये अपन बोल सकते हैं कि अरे दिस इज द डिफाइंड लिमिट, और ये तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि 7 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। बट नाउ इन दिस टाइप, और ऐसे अगर अपने को वेरीफाई करना रहा, इफ द लिमिट is given and we have to verify that this is the limit of the given function, then we use another definition of limit, that is epsilon delta definition. So first we will see what is the definition of epsilon delta. So what is epsilon delta definition? In epsilon delta definition, for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that 0 less than mod x minus a less than delta implies mod fx minus L less than epsilon, then L is called limit of function f of x as x tends to a. So we call L as a limit of function f of x as x tends to a, and we write limit x tends to a f of x equal to L. This is the symbol of the limit. So what is actually this concept? कि L को लिमिट अपन कह सकते हैं, we can say that L is the limit of the given function. But when, कब बोलेंगे उसको? तो epsilon is given and for epsilon we have to find delta. epsilon दिया है, अपने को डेल्टा फाइंड आउट करना है। कैसे रहना चाहिए डेल्टा? हाउ इज द डेल्टा? सच दैट इट सैटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो ऐसा डेल्टा फाइंड आउट करना है कि जो ये इनइक्वालिटी सैटिस्फाई करके फिर ये इनइक्वालिटी अपने को मिलना चाहिए। सो लाइक दिस वी हैव टू फाइंड द डेल्टा। सो टू वेरीफाई द लिमिट मीन्स फॉर गिवन एप्सिलॉन वी हैव टू फाइंड डेल्टा सच दैट it satisfy the inequality implies mod fx minus L must be less than epsilon. So this is exactly our definition of epsilon and delta. तो ये अपन definition यहाँ पे use करेंगे. Now we use this definition for solving this limit x tends to 1, 2x plus 5 equal to 7. Now this is the example where we have to verify that 7 is the limit of the given function. Now just now I have told you how we define epsilon delta definition. तो क्या होगा यहाँ पे? For given epsilon greater than 0, we can find delta greater than 0 such that 0 less than mod x minus 1 less than delta implies mod fx minus 7 less than epsilon. तो अपने को डेल्टा फाइंड आउट करना है. इप्सिलॉन इज गिवन, वी हैव टू फाइंड डेल्टा सच दैट फॉर दैट डेल्टा दिस टू इनइक्वालिटी मस्ट सैटिस्फाई. अब अगर अपन सॉल्व करते हैं, व्हेनेवर वी सॉल्व व्हाट वी डू, अगर सॉल्व करते हैं तो जो भी नोन क्वांटिटी है वहाँ से अपन शुरुआत कर सकते हैं. सो व्हाट आर द नोन क्वांटिटीज हियर? द नोन क्वांटिटीज इज एफ एक्स इज गिवन, 7 इज नोन, एप्सिलॉन इज हियर नोन. सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस. सो हाउ वी स्टार्ट? सो वी कंसीडर mod fx minus 7 equal to, what is the value of fx? 2x plus 5 minus 7. This is equal to 2x. Now 5 minus 7, that is minus 2. Now 2 take out common, x minus 1. So see here, we just simplify fx minus 7. So we have here 2 times mod x minus 1. But अपने को डेल्टा जो फाइंड आउट करना है, how was that delta? It must satisfy this inequality. ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होना चाहिए. नाउ व्हाट इज mod x minus 1? इट इज लेस देन डेल्टा. ये लेस देन डेल्टा चाहिए, तो यहाँ पे mod x minus 1 आया है. सो वी विल राइट दिस एज लेस देन 2 डेल्टा. सो वी हैव दिस mod x minus 1 हियर.
इट्स लेस देन डेल्टा, सो वी रिप्लेस इट बाय दिस। लेकिन अभी मॉड fx माइनस 7 कितना चाहिए अपने को, fx माइनस 7 लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, सो वी राइट हियर लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन ये यहाँ पे कैसे कब लिख सकते हैं, इफ इट रिप्लेस 2 डेल्टा बाय एप्सिलॉन, सो वी से दैट हियर 2 डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो 2 डेल्टा की जगह पे अपन ने एप्सिलॉन लिखा है, सो 2 डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन, दैट इज व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अपन ने डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट की, वी हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा। कशी आहे डेल्टाची व्हॅल्यू, दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा फॉर विच दिस inequality is 2 as well as this inequality is 2. So this is required delta and hence we say that 7 is the limit of the given function. तो ऐसे अपन को अगर whenever we want to verify the limits are given and we have to just check whether this is the limit for the given function, तो ये एप्सिलॉन डेल्टा की मेथड अपन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज टू फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन यू कैन डायरेक्टली यूज द 12th स्टैंडर्ड मेथड, वी कैन यूज डायरेक्टली, यू सिंप्लीफाई द फंक्शन, यू अप्लाई द फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द लिमिट। नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज कंटिन्यूटी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी। Now what is continuity? Continuity means just is in the name. What is actually continuity is nothing but what? Continuous. It is a continuous process we call. So as far as the graphical representation is there, so graphically अगर देखेंगे, so graphically suppose we have this graph. Now this is the graph of some function. So it is clear that suppose this is your 0 and I have considered this as 5. So we consider a function y equal to fx in the interval 0 to 5. In the interval 0 to 5 we have the function f of x. Now in this interval this function has this graph. अब ये जो ग्राफ है कैसा है ग्राफ, यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे भी ब्रेकिंग नहीं है, there is no breaking in the graph. So ultimately we say that the graph is continuous. तो ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ कंटिन्यूस आ गया, तो ब्रॉडली स्पीकिंग वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस। बट दिस इज नॉट द केस दैट this is the definition of the continuity. We need to define continuity through mathematical form. So what is the continuity? The continuity particular point के ऊपर define होता है। So suppose limit x tends to a, f of x equal to f of a. If limit x tends to a, f of x equal to f of a, then we say that the function is continuous at a. a के ऊपर वो function continuous होता है कब, जब उसका लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू एग्जिस्ट होती है। व्हेनेवर लिमिट एंड डायरेक्ट वैल्यू इज सेम, लिमिट की वैल्यू वही पॉइंट के ऊपर और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू एट दैट पॉइंट, इफ बोथ आर सेम वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये हो गया डायरेक्ट डेफिनेशन होगी जो अपने को एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन एप्सिलॉन डेल्टा अगर यूज करना है तो एप्सिलॉन डेल्टा सेम है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod x minus a less than delta implies mod fx minus f of a less than epsilon. So see here it's a similar to limit. Limit जैसा ही ये definition है, it is nearly equivalent to limit. एप्सिलॉन से अपने को डेल्टा फाइंड आउट करना है, सिर्फ लिमिट में यहाँ पे 0 लेस देन था, यहाँ पे नहीं है। Why? Because here the function must be defined at x equal to a. x equal to a के ऊपर function defined होता है क्योंकि f of a is a. So that's why 0 less than ये नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे l नहीं है. Why? Because we have to show that limit equal to f of a, not l. l नहीं दिया है f of a. So that's why this is the change. So इतना ही change है limit और continuity में. So if we verify this, then we say that if we find delta, then we say that the given function is continuous at x equal to a. तो एंड अगर अपने को लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट से अगर जाना है तो व्हेन वी से दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट a, इफ इट्स लेफ्ट लिमिट उसका राइट लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू सभी अगर इक्वल आता है, व्हेनेवर द लेफ्ट लिमिट एट a, right limit at a and direct value, if all three are equal, we say that the function is continuous. So this is the definition of continuity. अब जैसे ग्राफ देखिए यहाँ पे ये कंटिन्यूस है, लेकिन अगर यहाँ पे सपोज दिस इज द फंक्शन,
ये अगर यहाँ पे सपोज x इक्वल टू a इज देयर, दिस इज द पॉइंट x इक्वल टू a। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो इंटरवल है, यहाँ तक ये ग्राफ कंटिन्यूअस दिख रहा एंड फ्रॉम दिस a वी स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ तो यहाँ से तो एक ऑनवर्ड यहाँ तक 5 तक ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये डिफरेंट वैल्यूज आ गए। सो इक्वल नहीं है, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये लेफ्ट लिमिट होगा, दिस इज f ऑफ a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज द वैल्यू। यहाँ से इधर से आएंगे तो ये राइट लिमिट होगा, ये राइट लिमिट के लिए यहाँ से इधर आएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो लेफ्ट लिमिट के लिए अगर x वैरीज फ्रॉम 0 to a, fx फ्रॉम दिस, तो ये वैल्यू आ गई fx की, तो f ऑफ a प्लस की वैल्यू ये आ गई। और यहाँ से इधर से आएंगे a के तरफ तो ये राइट लिमिट होगा f ऑफ a प्लस, तो ये इधर से यहाँ से आएंगे तो fx कैसा आएगा, fx फ्रॉम दिस टू दिस साइड, तो ये वैल्यू आ गई। सो दिस इज द वैल्यू फॉर f ऑफ a प्लस, दिस इज द वैल्यू फॉर f ऑफ a माइनस, दिस बोथ आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट। So if left limit and right limit are different, then we say that function is not continuous, and from the graph itself we can say that the function is discontinuous, it is not continuous at x equal to a. So this is all about the concept limit and continuity, which we can use in differential calculus or to define the derivatives, differential equation and so on. Thank you.